everyone, welcome to my YouTube channel. How are you all? I hope fine. So today people, we are going to have discussion on law top 20 very important multiple choice questions. These MCQs are important and I hope that you people might be knowing this. ठीक है, आप लोगों को ये MCQs आने चाहिए और आप लोग भी खुद सॉल्व करिए इन MCQs को. Try to test and score yourself that how much you know. ठीक है, डू वॉच द कंप्लीट वीडियो एंड कंप्लीटली आप लोगों को ये MCQs आने चाहिए. आप लोग इनको देखिए और ट्राई टू स्टडी ऑल्सो. ठीक है, जो जो MCQs आप देखोगे उन टॉपिक को रेफर करना और उन टॉपिक को पढ़ना ताकि आपको पता चले व्हाई दिस ऑप्शन इज द करेक्ट वन that you should know, and this is the very much important thing and that should be known by every single student. Okay, you should know that. Now let us start with question number 1. What it says? It says that in the Hindu Marriage Act 1955, degree of prohibited relationship is defined under which degree of prohibited relationship is defined under which section? Yes, अगर आप लोगों ने हिंदू मैरिज एक्ट 1955 पढ़ा है अच्छे से तो आप लोगों को ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली आता होगा. यस, बताओ हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप डिफाइंड कौन से सेक्शन के अंदर है? सेक्शन 3B, सेक्शन 3C, सेक्शन 3E, सेक्शन 3G. यस पीपल, टेल मी व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी, राइट? आई होप दैट यू नो. और हम लोग कंफ्यूज मत हो ना, यहाँ पे बोला है डेफिनेशन, तो डेफिनेशन के अंदर देखिए आप लोग सेक्शन 3G के अंदर आप डिफाइंड है डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप. What it says that two persons are said to be within the degree of prohibited relationship. You people can check out that 3G section of Hindu Marriage Act 1955. आप लोगों को खुद पता चल जाएगा क्या क्या इंक्लूडेड है इस डेफिनेशन के अंदर. Easy, very very easy से. Question number 2. Very good, you know the answers. Now question number 2. Registration of marriage provision has been made under which section of Hindu Marriage Act 1955? ये कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है? ये वाला हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू लॉज से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए. अब हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज से रिलेटेड प्रोविजन कौन से सेक्शन के अंदर प्रिस्क्राइब्ड है? Section 10 of Hindu Marriage Act. This is HMA, means Hindu Marriage Act. Don't get confused, okay? Now Section 9 HMA, Section C, Section 8 of Hindu Marriage Act, option D, Section 12 of Hindu Marriage Act. What is the correct answer? Option A बोलता है Section 10, option B Section 9, option C Section 8, option D Section 12. तो बताइए क्या करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का? रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज प्रोविजन हैज बीन मेड अंडर सेक्शन 8 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट. प्रेफर इट. क्या बात करता है? फॉर द पर्पस ऑफ फैसिलिटेटिंग द प्रूफ ऑफ हिंदू मैरिजेस द स्टेट गवर्नमेंट may make rules regarding marriage. It may make rules providing that the parties to any such marriage may have the particular relating to their marriage entered in such a manner. You people can prefer section 8 of Hindu Marriage Act 1955. आपको इसका आंसर you people can find there. Easy है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, बट आई हैव अगेन सेड डायरेक्ट क्वेश्चंस में ही हम लोग कंफ्यूजन होता है हमेशा हमें. और आप लोग पढ़िए इस सेक्शन को, सेक्शन 8 को, डीलिंग विद रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिजेस. गॉट इट? नाउ क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन 3 क्या बात करता है? इट सेज दैट a child born out of void and voidable marriage under Hindu law is, child born out of void and voidable marriage is what? Legitimate, option B illegitimate, option C illegal, option D none of the above. So what is the correct option of this question? I have already discussed previously also in one of my video. If you people have watched, if you know, tell me the answer of this question. A child who is born out of void and voidable marriage under the Hindu law is legitimate child, illegitimate child, illegal, or none of the above.
This is very much easy, and I hope that you people know the answer of this question. Yes, as per section 16 of Hindu Marriage Act 1955, I repeat, Hindu Marriage Act 1955 के according, it is dealing with the legitimacy of children of void and voidable marriages. As per this, the child is said to be the legitimate one. ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट है, डायरेक्ट है इसका आंसर. सेक्शन 16 पढ़ा है तो आप लोगों को आना चाहिए. आप पढ़िए सेक्शन 16 को हिंदू मैरिज एक्ट के, सॉरी, आप लोग पढ़िए सेक्शन 16 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का. आप लोगों को खुद पता चल जाएगा व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. समझ आया? नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इट सेज दैट अ हिंदू मेल ऑफ 28 ईयर्स मीन्स कितने साल का है? 28 साल का है. He of age adopts a female child of 13 years of age, means he is adopting a female child of how many years? 13 years of age. The adoption is option A valid, option B voidable, option C void, option D illegal. So क्या करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का? एक हिंदू मेल है, उसकी 28 साल उम्र है, वो एक फीमेल चाइल्ड को अडॉप्ट करना चाहता है जिसकी एज कितनी है? 13 साल. अब आप लोग मुझे आप लोग इसका माइनस करके बताइए मुझे कितना आया? 28 minus 13 is how many years? 15. yes, 15 साल का एज डिफरेंस आया दोनों के बीच में. ठीक है, इन दोनों का एज डिफरेंस निकाला हमने. 28 minus 13 करिए तो आंसर विल बी 15 इयर्स का एज डिफरेंस है इस हिंदू मेल और दिस गर्ल के बीच में, जो उसको वो अडॉप्ट करना चाहता है फीमेल चाइल्ड के बीच में. नाउ आप क्या जो अडॉप्शन है क्या वो वैलिड है? बताइए. आप लोग सेक्शन 11 खोलिए अपना हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 का. आप लोगों को क्लैरिफिकेशन प्रॉपर्ली मिलेगा. सेक्शन 11 का थर्ड क्लॉज खोलिए. ठीक है, थर्ड क्लॉज क्या डील करता है? इट डील्स विद द एडॉप्शन. ठीक है, आप पहली बात तो सेक्शन 13 किसके ऊपर डील करता है? इट डील्स विद द अदर कंडीशन. ठीक है, किन कंडीशन के बारे में डील करता है 13 का 11 का? दिस पर्टिकुलर 11 कौन से सेक्शन? 11 का जो सेक्शन है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट का, वो डील करता है अदर कंडीशंस फॉर वैलिड एडॉप्शन. आप लोग मुझे बताइए कौन सा आंसर करेक्ट है इनमें से. आई हैव प्रॉपर्ली गिवन यू हिंट ऑफ दिस आंसर. सी 11 का थर्ड पार्ट डील करता है, वो बोलता है if the adoption is by a male and the person to be adopted is a female, the adoptive father is at least 21 years older than the person to be adopted. means उस मेल मीन्स उस हिंदू मेल और जिस चाइल्ड को फीमेल चाइल्ड को अडॉप्ट करना चाहता है, तो उन दोनों के बीच में जो कितने साल का एज डिफरेंस होना चाहिए? 21 इयर्स का एज डिफरेंस होना चाहिए. कितने साल भाई? व्हाट डिड आई से? 21 इयर्स का होना चाहिए. बट एज पर दिस क्वेश्चन गिवन, यहाँ पे कितने साल का एज डिफरेंस है? 51 इयर्स का एज डिफरेंस वी पीपल आर हैविंग. देन द अडॉप्शन इज ईदर वैलिड, voidable, void, illegal. adoption is void. adoption is void here. ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. ठीक है, दिस इज वेरी मच इजी. आई होप यू पीपल गेट टू नो अबाउट दिस एंड आपको खुद आता है तो वेरी गुड, कीप इट अप. यू शुड नो दिस. इफ यू डोंट नो, ट्राई टू सॉल्व. एंड वेरी गुड पीपल इफ यू नो, कीप इट अप. Now question number 5, what it says now? It says that under section 11 of the Hindu Succession Act 1956, the correct order of priority of section is reflected as follows. Option A, class 1, option 2, class second, cognates, agnates. आप लोग खुद देख सकते हैं इसका डायरेक्ट आंसर कौन सा है. ऑप्शन देखो आप लोग, मुझे खुद बताओ what is the correct answer of this question. I will be directly telling you the answer. I will not waste your time much because this question is very direct one. If you have properly studied Hindu Succession Act 1956, then आपको तो ये पता होना जरूरी है और आपको आना भी चाहिए इसका आंसर. नहीं आता तो very bad है, कोई बात नहीं. If you know, नहीं आता तो कोई नहीं, आप लोग पढ़ सकते हैं. नॉट बैड, इट्स अप टू यू पीपल. डोंट थिंक दैट यू डोंट नो. आई रिपीट, इट इज नॉट बैड इफ यू डोंट नो. इट्स वेरी गुड कि नहीं आता तो आप लोग बुक तो खोलोगे, आप पढ़ोगे तो इस बहाने. तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन?
Option A, B, C, D. What? Option D. Yes, very good. Option D is the correct answer of this question. That this one, option D, आप लोग देख सकते हैं, class 1, class 2, then agnates and cognates. This is very much easy, right? सबसे पहले इनको, फिर इनको order of priority of succession is reflected as follows: class 1, class 2, then agnates, then cognates. Easy one, very very easy. Now question number 6, what it says: the prescribed period of limitation for referring for preferring an appeal under section 28 of the Hindu Marriage Act 1955 is option A 30 days, option B 45 days, option C 60 days, option D 90 days. So what is this? What is the correct answer of this question? Yeah, tell me. If you have studied Hindu Marriage Act 1955, then you people should know the answer of this question. तो वहां पे आप लोग डायरेक्ट देखिए सेक्शन 28, आपको इसके अंदर आंसर मिल जाएगा. Yes, yes. What is the correct answer? Who will tell? I can't hear you. Yes, what is the correct answer? Very good. Option D is the correct one. 90 days. वेरी गुड. सेक्शन 28 देखिए हिंदू मैरिज एक्ट का, उसका भी आप लोग सब सेक्शन 4 देख सकते हैं. आप लोगों को समझ में आ जाएगा 90 डेज क्यों है. रेफर योरसेल्फ पीपल. आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. सेक्शन 28 पढ़ के जब आप लोग पढ़ोगे, इट्स वेरी इजी एंड यू शुड नो दिस सेक्शंस. आपको पता होना चाहिए एक एक. आई हैव प्रीवियसली टोल्ड यू पीपल, यू शुड पे वेरी स्ट्रॉन्ग अटेंशन सेक्शंस के ऊपर, एक एक सेक्शंस को पढ़िए. अगर वो आपको समझ में आ गए, आप ये क्वेश्चंस आराम से कर सकते हो. बाकी बुक भी साइड बाय साइड पढ़ते जाइए. असली लॉ आपको बेयर एक्ट्स के अंदर यू पीपल विल गेट टू नो, बिकॉज बुक्स के अंदर भी आप पढ़ सकते हैं आराम से. इट्स अप टू यू टोटली. व्हाट शुड आई से नाउ. नाउ प्रोसीडिंग फर्दर, question number 7. What it says that in giving a child in adoption by Hindu father, the requirement of the consent of the mother can be dispensed if she has been declared to be of unsound mind by the court of competent jurisdiction. She has finally and completely renounced the world. Option C, she has ceased to be Hindu. Option D, all of the above. So क्या इसका आंसर करेक्ट है? क्या बोल रहा है कि in giving a child in adoption by the Hindu father, the requirement of the consent of the mother can be dispensed with if option A, she has been declared to be of unsound mind by the court of competent jurisdiction, और या फिर उसने वर्ल्ड को रिनाउंस कर दी. she has finally and she has completely renounced the world. ऑप्शन सी बोल रहा है she has ceased to be Hindu. नो. ऑप्शन डी. क्या सारे सही हैं? बताइए क्या करेक्ट आंसर है. कौन सा आप लोग हिंदू लॉज में से किसके अंदर, किस प्रोविजन के अंदर यू पीपल विल बी गेटिंग द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इफ यू पीपल हैव प्रॉपर्ली स्टडीड. बताइए, टेल मी. ऑप्शन आई कांट हियर. ओके, प्रोविजन क्या है, कौन से सेक्शन के अंदर है ये? सेक्शन 7 खोलिए. बेयर एक्ट के अंदर कौन से उसका? हिंदू एडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 is dealing with this. All of the above option is the correct one. कब? अगर देखो कैपेसिटी ऑफ मेल हिंदू to take in adoption. Any male who is of sound mind is not a minor has the capacity to take or in giving a child in adoption by the Hindu father, the requirement of this. Okay, you have to refer section 7 of for this particular question. कब consent जरूरी नहीं है वाइफ की? If she has renounced the world, if she has been declared by the court of competent jurisdiction to be of unsound mind, if she has ceased to be Hindu, there is no need to take that the requirement of the consent of the mother can be dispensed with these certain conditions. You should know this. सेक्शन 7 प्रेफर करिए आप लोग हिंदू एडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट का 1956. यू पीपल विल गेट टू नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. डी इज द राइट वन एंड इट इज वेरी मच इजी. नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इट सेज दैट a Hindu wife is entitled to claim maintenance after the death of her husband from her father-in-law
under section 10 of Hindu Succession Act 1956, option B 24 of Hindu Marriage Act 1956, option C 25 of Hindu Marriage Act 1955, option D section 19 of Hindu Marriage Act and Hindu Adoptions and Maintenance Act 1956. तो क्या करेक्ट ऑप्शन है इसका? और ये भी काफी इजी है, डायरेक्ट क्वेश्चन है. अगर आप लोगों ने कौन सा किसके अंदर मिलेगा आपको इसका आंसर, अगर आप लोगों ने सेक्शन 19 ऑफ हिंदू एडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट तरीके से पढ़ा है, इट इज डीलिंग विथ व्हाट? इट इज डीलिंग विथ मेंटेनेंस ऑफ विडोज डॉटर इन लॉ. डायरेक्ट आंसर है इसका भी. आप लोगों को इसका आंसर पता होना चाहिए. और व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन? सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन हियर, कि section 19 of Hindu Adoptions and Maintenance Act is dealing with this, that ki a Hindu wife is entitled to claim maintenance after the death of her husband, means widowed daughter-in-law का मेंटेनेंस से रिलेटेड प्रोविजन अगर आपको देखना है तो आपको सेक्शन 19 के अंदर मिलेगा. आप लोग जाइए, प्रेफर दैट. Very easy, and you people should know this. Did you get? You people should know this, and if you know, very good. Yes, very good. Keep it up. And आप लोगों को sections भी पता होनी चाहिए. Section से ही question बनता है. अगर उन्हीं के provision आपको अच्छे से आता है, you know the topic, you know the chapter name, you know the guide, आप लोगों को अच्छे से उसकी meaning पता है, क्या बोल रहा है वो sections, and you people will easily able to solve these MCQs, and I hope that you people get to know this. Now question number 9, what it says? It says that a Hindu dies intestate, leaving behind 2 sons, 1 daughter and widow. His property shall devolve to option A, widow only, option B, sons and daughter only, option C, sons only, option D, sons, daughter and widow all. What is the correct answer of this question? You people know the answer? Do you know? Yeah, very good if you know. Yes, what option is the correct one then? Option D is the correct answer of this question. For this, you people should know section 8 of Hindu Succession Act 1956 का आपको पता होना चाहिए. क्या बात करता है section 8 of Hindu Succession Act 1956? It is dealing with general rules of succession in the case of males. In the case of males, it is dealing with that. Now, you have to, for that, you have to refer the schedule given. ठीक है, आप लोग देखिए, बात करता है वो class 1 years, then class 2 years. Class 1 के अंदर you people can see all these present. So if the Hindu dies in the state and he is leaving behind 2 sons, 1 widow and 1 daughter or widow, you have to refer. देखो 2 sons है यहाँ पे, 1 daughter and widow को छोड़ के जा रहा है. Then उसकी जो property होगी, it will be devolved as per the schedule. And for this you have to see the section 8 also of Hindu Succession Act 1956. This is very much easy. Option D is the correct one. Easy है ना? So now question number 10, if you know. Excellent. Question number 10. Under Muslim law, the marriage, whether consummated or not, iddat has to be observed in case of option A, divorce by husband only, option B, death of husband only, option C, by both divorce by husband and death of husband, option D, none of the above. So what is the correct answer? You people tell me what is the answer of this. Oh, you are not sitting in the front of me. I can't hear you. I can't see you, or I don't know you. Okay, you can reply. Yeah, very good. Option C is the correct answer of this question. Both divorce by husband and death. Under Muslim law, marriage, whether consummated or not, iddat has to be observed in the case of both divorce by husband and death of husband. So option C is the correct one. I hope you people get to know about this, and this was easy one. आप लोगों को हिंदू लॉज अच्छे से आना चाहिए, मुस्लिम लॉ भी अच्छे से आना चाहिए. ठीक है, फैमिली लॉ you should know about that, and आप लोगों को पता होना चाहिए. If you don't know, study again. What can I say more?
आप लोग पढ़िए उसे अच्छे से, ठीक है। नाउ प्रोसीडिंग फर्दर, now question number 11, it says that in Hindu law divorce by li'an is a right available to wife only, option B husband only, option C both husband and wife, option D neither husband nor wife. ये भी डायरेक्ट है, ये वाला right only it is given to the wife, option A is the correct one. I will not explain more because I know I have told you earlier also in one of my video and I hope that आप लोगों को खुद भी आता होगा, आप लोग भी देखिए, ठीक है। ये डायरेक्ट था तभी तो बहुत ही इजी है। Option question number 12, it says that under Muslim law a will may be made of, option A 1/4 of property, 1/3 of property, C 1/2 of property, option D whole property. So under Muslim law a will may be made of what? What is the correct answer of this question? Option B is the correct one. A Muslim can make the will of only a 1/3 part of his property. So this B is the correct option of this question. ठीक है, will को पढ़िए आप in Muslim law में. Now question number 13. It says that in Shia Muslim marriage, how many witnesses are compulsorily required? A 1 male and 2 females. Option B 2 males. Option C no witness. Option D 2 females. So what is the correct option of this question? Shia law में marriage के लिए how many witnesses are required? This question is for you people and this is mostly asked. काफी इजी क्वेश्चन है और हमेशा सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से एक है ये वाला। आपको पता होना चाहिए इसका आंसर। आप लोग मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, इफ यू आर वाचिंग माय वीडियो लाइव दिस, तो आप लोग अभी लाइव में बताइए मुझे कि क्या इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 13 का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। वेरी गुड, बिल्कुल good. Now question number 14. In which of the following cases a lease of immovable property does not determine? Option A on the service of a notice to quit, option B by forfeiture, option B by express surrender, option D by efflux of time limited thereby. What is the correct answer? So for this you have to refer which section of Transfer Property Act, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882 को खोलिए, उसमें कौन सा सेक्शन यू हैव टू रेफर? सेक्शन 111 ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, रेफर इट 1, 1 एंड 1। ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट का रेफर करो, आप लोगों को मिल जाएगा। इसका डायरेक्ट आंसर है सी इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस अ लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट डिटरमिन इट इज टॉकिंग अबाउट, ठीक है। और सेक्शन 111 ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का वो बात करता है डिटर्मिनेशन ऑफ लीज, तो उसके अंदर यू पीपल कैन सी फ्रॉम बाय फोरफीचर, यस इट इज देयर, बाय एक्सप्रेस सरेंडर इट इज देयर, बाय इफ्लक्स ऑफ टाइम बट time limited thereby, I repeat, by efflux of time limited thereby is also there, but option A is not there. A is the correct one here. समझ आया? ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आप लोग सेक्शंस को पढ़िए और फिर उसको यूज करना सीखिए। सो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए। नाउ question number 15, it says that under section 104 of the Transfer Property Act, whom the power of making rules is conferred? Option A central government, option B state government, option C Supreme Court, option D High Court. So बताइए क्या करेक्ट ऑप्शन है। इसके लिए आप लोग सेक्शन कौन सा डायरेक्ट लिखा गया है यहाँ पे कि सेक्शन 104 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 कि whom the power of making rules is conferred, तो क्या आंसर है इसका? देखो आप लोग और मुझे बताओ। तो वहां पे लिखा गया है द हाई कोर्ट may from time to time make rules consistent with this act for carrying out. So option D is the correct one for this question. D, High Court. It is the correct one. Yes, you know, very good. Correct answer is option D. Now question 16, it says that a magistrate may take cognizance of an offence upon option A his own knowledge, option B police report, option C receiving complaint,
ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए बताइए। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? बहुत इजी है। यू हैव टू रेफर विच सेक्शन ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, कौन सा सेक्शन यू हैव टू रेफर? सेक्शन 190 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, सीआरपीसी का 190 सेक्शन खोलिए, उसके अंदर बात करता है कॉग्नाइजेंस ऑफ ऑफेंसेस बाय मजिस्ट्रेट। ठीक है, तो उसके अंदर यू पीपल विल बी फाइंडिंग आउट ऑल दीज ऑप्शंस। मजिस्ट्रेट जो है ही मे टेक कॉग्नाइजेंस ऑफ एन ऑफेंस अपॉन receiving complaint, upon a police report of such facts, upon information received from any person other than a police officer, or upon his own knowledge that such offense has been committed. So all of the above is the correct one. D is the correct answer of this question. D. समझ आया? कोड आप लोग 190 सेक्शन प्रेफर करें किसका? सीआरपीसी का, पता चल जाएगा। Now question number 17, it says that power to grant bail under section 439 of the Code of Criminal Procedure 1973 is vested in the High Court, Session Court, Magistrate. Option D, both A and B above. So बहुत ही easy है, both Sessions Court and High Court can grant bail under section 439 of Code of Criminal Procedure 1973. You know that. Very good. Yes, correct answer is option D. All of the both A and B. Not all of the above, option ही नहीं है, तो both A and B. D is the correct answer. Refer section 439 of the CRPC for this question. Now question number 18. It says that provisions regarding plea bargaining are under CRPC in chapter XIX, chapter XXIA. Option C, option D. So what is the correct answer of this question? ये भी direct है, provision regarding plea bargaining are given under CRPC. कौन से section के अंदर दिया गया है? कौन से चैप्टर के अंदर दिया गया है? चैप्टर कौन सा है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे? ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, चैप्टर XXIA. So B is the correct one. It is dealing with plea bargaining and it was inserted by Act of 2006. This is the correct one. कौन सा? ऑप्शन B is the correct answer of question number 18. तो आप लोगों को ये वाला पता होना चाहिए and काफी easy है. Now Now 19 क्या बोलता है? Inherent powers may be used by the court for option A, the end of justice, option B, to prevent abuse of the process of court, option C, both A and B above, option D, none of the above. So क्या करेक्ट आंसर है इसका? इनहेरेंट पावर, पहले बात आप लोग ये बताइए कि कौन सा सेक्शन प्रेफर करोगे आप? यू हैव टू प्रेफर सेक्शन 100 विच 151 ऑफ सीपीसी. ठीक है, सिविल प्रोसीजर कोड का आप लोग 151 सेक्शन खोलिए सीपीसी का. ठीक है, सीपीसी के 151 सेक्शन को पढ़िएगा इस क्वेश्चन के लिए फॉर एज अ हिंट फॉर यू पीपल. ठीक है, यहाँ पे बोथ A and B above is the correct one. Inherent power may be used by the court for the end of justice to prevent abuse of the process of the court. ठीक है, so both A and B is the correct option of this question. Now question number 20. Which one of the following is not an essential element of theft? Option A, dishonest intention. Option B, removal from possession. Option C, immovable property. Option D, without consent. This question is for you people. IPC के अंदर you people can find out this answer related to this question. You people tell me below in the comment box what is the correct answer of this question if you people are watching this. तो आप लोग बताइए क्या करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का, और काफी इजी है, आपको आना चाहिए. इफ यू डोंट नो, पढ़िए. इफ यू नो, एक्सीलेंट, आउटस्टैंडिंग, यू शुड नो एवरीथिंग. और आपको ये पता होना चाहिए कि करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का. अगर नहीं आता तो पढ़ो उसे, काफी इजी है. ठीक है, अगर नहीं सच में इफ यू नो देन इट्स इजी. इफ यू डोंट नो तब डिफिकल्ट हो सकते हैं ये डायरेक्ट क्वेश्चंस भी. तो डोंट वरी, try to test and score yourself, and first try yourself and must prefer your books whenever you are studying. direct पढ़िए, आपको पता होना चाहिए sections के बारे में. If you know, then you can easily able to solve each question, right?
So try to solve it, and each question is important one. Try to do it yourself. Okay. And if you people have any doubt, do let me know below in the comment box, and do like and subscribe my YouTube channel for more videos, and keep watching videos and try to solve all the MCQs given in the playlist of law MCQs mock test. Try to solve, do all those questions of this the mock test के जितने भी सीरीज दी गई हैं मेरे जो वीडियोस में अपलोडेड है प्लेलिस्ट के अंदर, आप सॉल्व करिए. And if you want to join membership, you people can join examining and specifying with Pooja, my membership, where you people will get to know about many different things. I have already provided the link in the description box. You people can check out there. And thank you so much. Keep watching.